All right, Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'een. Assalamu alaikum, everybody, and Azam. वालेकुम अस्सलाम यूसुफ भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ आजम, आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। बड़े गुजर खिलखिला रहे रही हैं आप। गुजर रही है गुजर रही है? क्यों, गुजर अमेरिका रही दिल नहीं लगा? है गुजर ही रही है अभी फिलहाल। अच्छा, चलें, आप खैर खैरियत से पहुंच गए हैं, और क्या चाहिए। हम्म तो हाउस द वेदर इन एटलांटा और कैरल्टन एक्चुअली? इस्लामाबाद जैसे ही, बस बारिश ज्यादा है। बारिश ज्यादा है? बाकी इस्लामाबाद जैसे ही मौसम है। Okay, okay. Chale, Zabardast, Zabardast. All right, so today we launch the new year, 2021. We're sitting 1st of January, and we decided this was a good time for us to announce that officially Telepsychiatry Pakistan has launched. And we're going to talk about today कि टेलीसाइकाइट्री पाकिस्तान किस तरह से मुख्तलिफ है, इसकी ज़रूरत क्या थी, what is it looking to do, what is it looking to give, what is it looking to get, और इन डायरेक्शंस, इन डायमेंशंस पे, इन एरियाज पे आज हम बात करेंगे and see what we can make of it. So यूसुफ भाई, you have been doing ऑनलाइन कोचिंग काउंसलिंग और आप ऑनलाइन लोगों को देख रहे हैं। और मैं भी पिछले कुछ माह से आपके साथ कोशिश कर रहा हूँ देखने की। आप देख रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ देखने की। सो ठीक है। वाई के एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म की क्या जरूरत है? और ये प्लेटफॉर्म एक ये वाली अगर मैं बहुत फ्रैंकली बात करूं तो यूसुफ रजा इज अ ब्रांड नाउ। तो वो इस्लामाबाद, पिंडी इस्लामाबाद में एटलीस्ट कुछ ना कुछ जो है वो है। तो अपने नाम को बदल के इस इधर एक एक सेपरेट एक स्ट्रक्चर कायम करना, और ऑफ कोर्स आपने हम सबको जबरदस्ती खींचा है इसमें। तो क्या जरूरत थी ये करने की हमारे साथ? देखिए, जब when you came on board and उस टाइम पे भी हमारी बात हुई थी that the response that people are giving, the need that exists, that I am quite frankly unable to satisfy or fulfill in any way. कि मैं जितना भी कर लूँ, जो भी कोशिश कर लूँ, जितने लोग अप्रोच करते हैं, जितने लोग रीच करते हैं, जो उनकी ज़रूरियात हैं, जो वो चाहते हैं, वो मैं नहीं कर सकता था। एंड क्वाइट फ्रैंकली आई वाज माई सेल्फ सरप्राइज कि पिछले 2-3 सालों में how effectively this has worked, how much people have responded, how well people have responded. And jab when you did come on board, then it was unfair that this is coming from the Yusuf Raza brand, whereas this is something that is far beyond me. कि मैं आपके ज्वाइन करने से पहले भी जो भी काम कर रहा था, it was nurtured, it was informed by our mutual discussions, the theoretical framework that we subscribe to, right? So it wasn't just me, and even before you practically came on board, you were theoretically on board, and there's a whole group of us that has been looking to develop psychology and clinical psychiatry in a particular direction. So we took that up. It was important that if this is to become something effective, if this is to become something that has an impact, which the field is desperately in a need of, it has to go beyond an individual name. It has to go beyond an individual brand, and it has to become a phenomena. It deserves to become a phenomena. और इसको एक फिनोमेना बनाने में, इसको एक एंटिटी बनाने में, इसको एक एक्चुअल मूवमेंट बनाने में, it was important that this was established as a distinct entity with a group of people committed, dedicated
to the cause that telepsychiatry Pakistan aspires to be. So, what is the क्योंकि तो एक अलग प्लेटफॉर्म बनाने की क्या जरूरत है? बिकॉज वी हैव सम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जहाँ से डॉक्टर्स को अच्छी खासी अपॉइंटमेंट्स भी आती हैं और वो आपको लैब रिजल्ट्स पे शेयर भी देते हैं। तो एक एक अलग प्लेटफॉर्म बना के वो, क्योंकि इसमें बहुत आपको एक स्क्रैच से काम करना पड़ रहा है। तो ओला डॉक और मरहम और इस तरह की ये बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे रोज के लोगों को सैकड़ों मरीज आते हैं। सो इज देयर क्या इसकी ये वजह है कि आपको यहाँ पे अपने नाम से मरीज ज्यादा आ रहे हैं, या इज देयर सम अदर डिफरेंस? See, it's very important to establish here that when we say telepsychiatry, तो जो एक पॉपुलर परसेप्शन है टेलीसाइकाइट्री का या साइकाइट्री का इन जनरल, और इवन फॉर दैट मैटर क्लिनिकल साइकोलॉजी, what we're bringing into the market is something distinct, it's something unique. It is not your run-of-the-mill psychiatry. बहरहाल हमने ये बात की है जब से हम साइक बैठक कर रहे हैं, हमारी सोशल मीडिया पोस्ट्स हैं, we're not satisfied with the way the brand of psychiatry or the practice of psychiatry is carried the world over. There are some serious problems that the field is facing that are staring us in the face as practitioners. लेकिन उनको acknowledge करना, उनको identify करना, उनको repair करने की efforts को seriously लेना, that is not happening. Right? तो अब हम इस चीज को establish करने के लिए कि we have something distinct to offer, we have something unique to offer. This isn't the same old practice of psychiatry जो आपको किसी भी क्लिनिक में मिलेगी या किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं तो आपको उसी तरह की साइकाइट्री प्रैक्टिस होती हुई नजर आएगी। और एनीवेयर इन द वर्ल्ड हम ये चीज़ बारहा कहते आए हैं कि हमारा क्रिटिसिज्म इज़ नॉट अगेंस्ट द वे साइकाइट्री इज़ प्रैक्टिस जस्ट इन पाकिस्तान। आवर क्रिटिसिज्म इज़ अगेंस्ट द फील्ड एज टू हाउ इट इज़ कैरीड, represented and practiced across the world. And that is, I mean, we understand, we're fully aware that that's a very serious claim that what we're holding up. लेकिन हम हवा में नहीं खड़े हुए, एक पूरी ट्रेडिशन है साइकाइट्री के अंदर ही। This is not coming from outside of psychiatry. ये कोई लाइफ कोचेस की क्रिटिसिज्म नहीं है साइकाइट्री पे, ये साइकोलॉजिस्ट की क्रिटिसिज्म नहीं है साइकाइट्री पे। ये साइकाइट्री के अंदर का एक ट्रेडिशन है, एक रिवायत है। इसके अंदर बड़े बड़े नाम मौजूद हैं जो पिछली पूरी सदी के अंदर बार बार ये कहते आए हैं कि हमें क्या चीज़ें मुख्तलिफ करनी है और क्यों मुख्तलिफ करनी है। जिन लोगों का हम इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इंसानों के बारे में हम डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम उसी रास्ते पे चलते रहे जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं तो हम खराबियां पैदा कर रहे हैं, हम बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। And those people haven't. And Viktor Frankl, for example, just to give one example, the name that Viktor Frankl has around the world, the popularity that he has, concentration camp survivor, everybody knows that. Oscar Pfister Award भी दे दिया जी Viktor Frankl को जी for service to psychology and religion। ठीक है जी, बहुत बड़ी बात है। उसको recognize कर लिया कि बहुत बड़ा काम किया है आपने, बहुत वाह हुई, बहुत तालियां बजी, बड़ा 28 PhDs भी दे दी ऑनररी, सब कुछ कर दिया। लेकिन आज एक एवरेज प्रैक्टिसिंग साइकाइट्रिस्ट दुनिया में कहीं भी हो, चाहे वो अमेरिका में हो, इजराइल में हो, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम में हो, यूरोप में हो, जहां भी हो, इवन ऑस्ट्रिया में हो, उसको विक्टर फ्रैंकल की सोच, उसकी आइडियोलॉजी, उसके बारे में कितना कुछ पता होता है? प्रैक्टिकली जिल्च। I don't think there is a single university in the entire world जो अपने अंडरग्रेड या ग्रेजुएट कोर्सेज में से कोई एक सेमेस्टर में कोई एक कोर्स भी ऐसा हो जो लोगोथेरेपी पढ़ाता हो। It's going to be very hard to find, आटे में नमक के बराबर।
तो वो सारी वाह वाह करना, वो सारी बड़ाई करना, वही कंसंट्रेशन कैंप सर्वाइवर, वही ये मीनिंग इन लाइफ, उसका क्या फायदा है जब आपने उसकी जो सारी बातचीत उसने की हुई है, जो उसने द चैलेंज किया हुआ है मेन स्ट्रीम को, स्टेटस को, प्रैक्टिस को, इफ दैट इजंट बीइंग टेकन सीरियसली, इफ दैट इज, उसकी जो एकेडमिक वर्थ है, उसकी जो क्लिनिकल वर्थ है, उसको कोई घास ही नहीं है, उसको कोई सीरियसली लेने को तैयार ही नहीं है. सो व्हाट डबल स्टैंडर्ड्स आर दीज? सो फॉर अस sitting in Pakistan, looking at the state of affairs of our field the world over, we find it very important that these neglected resources from within our tradition of psychiatry as psychiatrists need to be taken more seriously, कि जो हमारी फील्ड को मसाइल दरपेश हैं वो इन neglected resources ने, इन बड़े बड़े नामों ने हमें बहुत they've given us something so incredible, so precious, that if we don't take that seriously, we're doing a disservice not just to our field but to humanity and what humanity expects of us. हम उनके मुजरिम हैं अगर हम उन तक ये चीजें नहीं पहुंचाते और इस चीज को उस तरह से डेवलप नहीं करते the way the population expects for us to do. As a community, psychiatrists and mental health professionals in general owe this to the public. हम public resources पे, public की investment पे, we have taken up this mantle, this responsibility, and if we're not performing, then we really need to be ashamed of ourselves. And if we're not performing that, if we're not aware कि हम अपने results और कहीं पे नहीं जाओ, अपने साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स को मलहूज रखो, अपने एम्पिरिकल स्टडीज को सामने रख के देखो, व्हाट रिजल्ट्स आर यू प्रोड्यूसिंग, आप क्या करने चले थे और आप क्या कर रहे हो. That's all you have to look at. You don't have to look at religion criticizing, you don't have to look at philosophy criticizing, you just look at the scientific results that you're producing and are they adequate, and if not, what is being done about it, and why aren't those neglected or जो एक तरह से outcasts हैं. Viktor Frankl is an outcast in modern psychiatry. Why aren't these resources being taken? And he's not the only one. Oscar Pfister, who even knows the name, even psychoanalytic tradition के अंदर Oscar Pfister का नाम कितने लोगों ने सुना होगा, कितने लोगों ने पढ़ा होगा. So to start taking this seriously, and how these resources allow for us as Pakistani psychiatrists to bring to the forefront cultural resources, कि हमारी लैंग्वेज रिसोर्सेज के अंदर, हमारे लिटरेरी रिसोर्सेज के अंदर, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल रिसोर्सेज के अंदर, फिलोसॉफिकल रिसोर्सेज के अंदर इतना कुछ मौजूद है जिससे आज की साइकाइट्री बेनिफिट कर सकती है. लेकिन जब तक वो इस जरिए से नहीं गुजरेगा, इन लोगों जो फील्ड के अंदर लोग हैं उनके साथ डायलॉग में नहीं आएंगे, वो रिसोर्सेज हम सामने नहीं लेके आ सकते. So to be able to get those resources out there for people to see how much benefit they can possibly bring. And this, if we're just wearing the brand of another commercial entity, which is already prevalent, we won't be able to do that. We won't have the freedom to do and say the way we want to do and say and carry ourselves forward academically, intellectually, clinically. So, Yusuf, तो टेलीसाइकेट्री पाकिस्तान क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है? बिकॉज आफ्टर ऑल सर्विसेज तो वही होंगी कि एट मैक्स क्या होगा, इंडिविजुअल कोचिंग होगी, कोई ग्रुप थेरेपी हो सकती है, कपल थेरेपी हो सकती है, कोई कॉर्पोरेट सर्विसेज हो सकती हैं. तो टेलीसाइकेट्री पाकिस्तान क्या ये सब कुछ कर रही है, या और क्या ये साइकेट्री करेगी, या सिर्फ पर्सनल कोचिंग करेगी, या सिर्फ लोगोथेरेपी करेगी? तो ये वो जो हैंड्स ऑन काम है वो क्या होगा? Right. So hands-on calm is not going to be much different from what you typically see out there if you look at it from the outside. कि हाँ, 1-to-1 sessions इसमें होंगे, individual sessions इसके अंदर होंगे, 45 minutes to an hour के वो sessions होंगे, वो individuals के भी होंगे, वो couples के भी होंगे. So all of that is going to be there.
What we're doing differently is कि हमने एक recognition है कि हमारे पास जो resources मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, and we know this as practitioners, mental health gap के बारे में हमें पता है, right? And the mental health gap allows for us to recognize कि जो specialist resource दरकार है, we don't have that. There's 15 million and according to some 24 million people in Pakistan who require professional help. We don't have the available resources to cater to that population. 400 psychiatrists and 500 psychiatrists and 400 clinical psychologists, 500 clinical psychologists. How are they expected to provide for 25 million people or 24, however much the number is? It's humanly impossible. हम अगले 20 साल 30 साल में भी ये gap fulfill नहीं कर सकते. So the recommendation is that we have to bring in non-specialist resources जो कि इन इस burden को shoulder करने में हमारी help करें. एक चीज. दूसरी चीज ये कि जो ये तो चलो हम कह रहे हैं ना कि 15 मिलियन 24 मिलियन वो हैं जिनके क्लिनिकल सिम्टम्स इस लेवल के हैं that they require professional help. इससे कहीं ज्यादा 4 गुना 5 गुना 10 गुना even perhaps वो लोग हैं जिनकी सिम्टोमेटोलॉजी इतनी सिवियर तो शायद ना हो जो क्लिनिकल लेवल तक आप कहें कि अच्छा जी एक डायग्नोसिस है जो भी, बट they need help. They need help with the routine challenges of life. How do you with respect to academic performance, professional performance, household life, relationships, dealing with suffering, इन सारी चीजों पे लोगों को मदद चाहिए होती है, गाइडेंस चाहिए होती है जो आम जिन रिवायती रिसोर्सेज से अवेलेबल थी एक ज़माने में, अब वो उनकी रेलेवेंस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, right? So there's perplexity, there is an ignorance that prevails. कुछ cliches popularize हुए हैं जो लोगों की इन situations में मदद करने के बजाय situation को और ज़्यादा complicate कर रहे हैं. So there's that population that requires help, that requires guidance, that requires for those incorrect pathological concepts to be corrected. Uske liye what we've done is we've come up with this concept of a mental health coach. Now, what a mental health coach is, people have an idea कि life coach क्या होता है. And we've spoken about life coach, उसकी ज़रूरत क्या है, उसके benefits क्या हैं, उसका नुकसान क्या है, उसका खतरा क्या है, right? We've previously spoken about that. What a mental health coach is anyone who is, they may not have the expertise of a mental health professional in that they're not clinical psychologists or psychiatrists per se, but they are lay practitioners who have the requisite training and the supervision to manage people who have routine challenges, जिनकी severity इतनी ज़्यादा नहीं है, जो diagnostic categories जो बहुत severe illnesses की होती हैं, जो वाकई में they require much more qualified or specialized help, वो वाली नहीं है, लेकिन वो एक बहरहाल they can help shoulder the burden very effectively, at times more effectively than what a clinical psychologist or a psychiatrist may be able to handle, right? तो उस burden को shoulder करने के लिए, उनको facilitate करने के लिए, we've developed a training program. We have carried out that training program. और उसमें सबसे बड़ी बात जो what we've put in front is the trustworthiness of the coaches. कि we know कि इस प्रोफेशन के अंदर या इस जो एक इंटरैक्शन होती है उसमें कितनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर होती है, उसमें कितनी पर्सनल लेवल तक बातचीत जाती है, तो उसको कमर्शियलाइज ना करना, उसको to make just to get more and more numbers of people addressed, just having anyone do anything. We wanted to contain the quality of what we give out, especially with respect to trustworthiness.
And so every single one of the people who we have on our team as mental health coaches, these are people that we have personally worked with, know, and have able to develop as much trust as we possibly can, so as to say, okay, अब हमारे recommendation पे या हमारी supervision में जो लोग जनरल पॉपुलेशन को हेल्प करेंगे विद देयर रूटीन चैलेंजेस, इनके साथ वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे, those are people that we trust. Those are people that we would trust with ourselves, with our own families, right? So this is something that we've been able to develop, and we've been able to put out there. तो एक स्पेशलिस्ट और ले प्रैक्टिशनर्स का एक जो गैप है, एक जो डिवाइड है, उसको हमने ब्रिज करने की कोशिश की है, ऑल द टाइम लुकिंग कि दोज प्रैक्टिशनर्स आर डेवलपिंग टू बिकम एज स्पेशलाइज्ड एज पॉसिबल फॉर टू मीट मोर कॉम्प्लिकेटेड नीड्स एज वेल. That's one dimension of where we're working. Okay, so यूसुफ, तो अगर आप उन सर्विसेज को लिस्ट डाउन कर दें कि क्या क्या चीजें होंगी जो कि टेलीसाइकेट्री ऑफर करेगा. So what we're offering, anyone who accesses our website will be able to see that there is an option for one-to-one services, one-to-one sessions. Every person who takes a one-to-one session, now we want to make sure that hamare coaches jo hain, they are not biting off more than they can chew, in the sense कि कोई severe diagnosis है, कोई severe condition है, तो उसके लिए we've established a filter clinic. Filter clinic में we will ensure कि that's managed by a psychiatrist. ठीक है, for now that's Dr. Omar Murtaza. He's working with us and he's our filter clinic in charge. वो initial evaluation करेंगे to ensure कि कोई सिवियर डायग्नोसिस नहीं. अगर तो कोई होता है मॉडरेट टू सिवियर के लेवल पे डायग्नोसिस आता है दैट वी फील इज बियॉन्ड, that requires more specialized help, तो फिर those will be referred to our psychiatrists, either Azam or myself. And then there is, for the more routine cases, usually the referral will be to our mental health coaches. So just second session onwards honge और फिर हमारे coaches के साथ session होंगे. The other thing that we've done to ensure that our collaborators are, and this is another distinction that we carry, we will not, we choose not to identify the people who seek out our services to label them as clients or patients. We look to develop this concept of calling them collaborators, in the sense that this is collaboration, this is a mutual effort. The दोनों का effort है, there is mutual growth in this process. जो आपकी help कर रहा है, जिससे आप help ले रहे हो, वो भी साथ साथ grow करना. You're learning from each other. You're not just bringing nothing to the table. There's a whole lot that you do have to bring. So the coaches will then take on the collaborative process. It will be done under supervision, that the more senior members will be supervising those interactions to see which direction they're going in. And to be honest, for the past couple of months that we've done this, it's been incredible. I've learned so much from our coaches and their interactions that I don't think anything can be more heartening than that. कि किस तरह से the people who have learned with you over so many months in the past, and for some the interactions have been over the past couple of years, how effectively they're carrying out their responsibilities and the kind of response that their collaborators are giving. It's incredible. It's very heartening to see. So there's that. Ek or distinct, Azam, just the last service is the email. The sessions can be carried over emails as well. A lot of people, different limitations, different restrictions, prefer not to have live audio or video sessions. They feel more comfortable with respect to email. So we've opened up that channel as well. Writing itself is very therapeutic. तो उसमें वो added advantage आ जाता है. So that's being carried out as well. And we allow for people to remain anonymous throughout their interactions.
So that's another plus that only online services can provide. Whether audio, video, or email, the collaborator, the person seeking out our services, can remain anonymous completely. बट यूसुफ जो आपने आगे बार बार आपने कहा कि नॉन स्पेशलिस्ट, एक तो ये कि ये जो नॉन स्पेशलिस्ट हैं ये कौन है, क्या ये कोई मैट्रिक एफएससी बीए किया हुआ, इन्होंने बीएससी की हुई है, क्या किया हुआ है, और फिर के डोंट यू थिंक नॉन स्पेशलिस्ट कैन डू मोर हार्म देन गुड, तो उसके लिए फिर उसका क्या होगा? Okay. And of course, why would someone go to a non-specialist to have a haircut? बिल्कुल ठीक है. So the non-specialists के जो हम term use करें, this is relative to super specialists, let's say. Okay, relative to people who have gotten the requisite qualifications and all of that, clinical psychologists and psychiatrists. All of our mental health coaches will be otherwise very qualified. Most of them are doctors. A lot of them, those who are not, are psychology. They have a master's in psychology or will have a master's in psychology pretty soon. That's the minimum qualification of most of our coaches. ठीक है, कोई भी master's level से कम पे नहीं है. Okay, एक चीज. दूसरी चीज, they have been एक फौजी है बस. There's that as well. So other than that, they've been trained with us, by us. Okay, over the past, the best part of 2020 in lockdown, जो ज़्यादातर हमारी activities थी, we had 4 days a week, 2 hours a day sessions, delineating, detailing what to expect in one-to-one sessions, what makes us distinct. Frankel पे discussions हुई, Alam पे discussions हुई, one-to-one interpersonal जो therapy होती है, क्या होती है, cognitive behavioral therapy, what is it, how does it work. All of these were brought into discussion. Detailed discussion was carried out. They were guided and supervised into how to assess, how to address different routine challenges that they will experience in those sessions. So that training process was carried out, and it spanned over the best part of last year. That's what we've been invested in. So they're not completely lay or bilkul hi non-specialist hain. Non-specialist in the sense कि ठीक है, they don't have the, and we're not expecting them to give medication. We're not expecting them to carry out structured therapies. We don't carry out structured therapies ourselves, right? We don't have those certifications as such. So that's them. How do we ensure that they don't do more harm than good? That was one area of focus within our training process, and the continued supervision. Every single case will come under supervision, of course, with their confidentiality maintained. Certain details change, so the rest of the team and the supervisor even does not know the real identity of the collaborator. We ensure that जो more harm than good है वो ना हो. Again, and we know this for a fact कि हम as specialists भी we are liable, we are very likely to do more harm than good in certain cases. गलतियां किससे नहीं होती? The best surgeons make mistakes. The best medical practitioners can make diagnostic errors, right? And the best psychiatrists can end up doing harm, right? The idea with the specialist is they're less likely to do harm, and they're more likely, hopefully, to do good, right? So we bring that in the supervisory process. And जैसे हमने what I highlighted before, okay, because it is these our coaches are handpicked, they're incredibly talented, committed people. We've ensured that only the best of the lot got through to this process. And then the trust element, that these are people who will bring their errors
to the discussion as well. They will bring their shortcomings or their difficulties openly to the supervision process. So that's our effort in bridging the gap and in ensuring that as best as possible that we don't do more harm than good. ठीक ठीक एंड यूसुफ एक आपके जो टेलीसाइकेट्री की जो एक सर्विस है आपके यानी हमारे सॉरी तो वो having a hard time to own it इसका एक सर्विस है that we are offering services to the corporate sector. What is this? So we do have a recognition that there's more and more corporate companies in the corporate sector are coming to the realization कि अब हम अपने employees को excuse the terminology but गधों की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते कि we can't continue to burden them with more and more work, and if they can't carry that burden, we just replace them with stronger people who are more resilient in carrying that. They've come to this realization that the stronger their employees are with respect to managing their mental health, the more productive and efficient they're going to be in the workplace as well. So that's something that we've been working on with them, in which we And provide कोई trainings. कोई ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट सेक्टर में से अभी तक आपके साथ ऑन बोर्ड भी आई है? Yes, we're working. I think one of the most impressive companies or organizations within the corporate sector is Telenor, that they have this recognition and insight that the mental health of our employees is important. Or usme phir we have one-to-one sessions with them, those and completely anonymous. The employers do not know who from their organization is seeking help, but they're paying for them. And then we have those training sessions in which we have unki puri organization ko we would address, giving different topics really relevant to psychological health, productivity. So we would provide that. There's an additional service that we provide with respect to the corporate sector, and that is that of anonymous feedback. Okay, one culture that organizations fail to develop is that communication channel. कि जो subordinates हैं वो अपने जो भी the people in charge उनके बारे में जो सोचते हैं असल में वो उसका इजहार करने से कतराते हैं, and necessarily वो जो workflow है उसके अंदर that becomes a huge impediment. So we offer that we can become that anonymous or that third party that they can reach anonymously, and then we report their honest and blunt feedback to the management so that they can bring about the changes that are necessary to But we also लेकिन हम उसको थोड़ा सा वाटर डाउन भी करते हैं अगर वो एचआर से मुताल्लिक ही हो. We will do that as well. We will provide that additional service. So that's these are some of the areas that we're working on and looking to develop. As one more thing that I would want for you to comment on, one aspect of our organization is that every single person, चाहे वो coach है या consultant है, psychiatrist है या psychologist है, जो भी है, they are required to continue their education one way or the other. So can you enlighten us as to why we've chosen to go down that route? क्योंकि मैं so I will comment on that क्योंकि मैं उसको सबसे ज़्यादा भुगत रहा हूँ. So that's so this is precisely because
जो चीज़ हमारे जो जो लोग हमारे सेशंस लेते हैं उनको इस चीज़ का अंदाजा है that we have a firm belief कि either you grow or you die, कि unless you are growing in a certain way, you are developing your resources more and more, because we हम ये कहते तो हैं कि there is so much out there to learn और ये वो फलाना, लेकिन unless you grow in meaningful ways, आप लोग यू कैन नॉट, ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक जगह रहें और आप अपने और आप साबित कदम रहें। तो साबित कदमी इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू ग्रो। इट इज नॉट इफ के आपके पास जो कुछ है आप उसको पकड़ के बैठे रहें, एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट के कोई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो एक पॉपुलर थीम है कि नई डेवलपमेंट्स हो रही है, मैंने वो सीखनी है, ये वो फलाना। इवन अगर नई डेवलपमेंट्स ना भी हो रही हो, जो कुछ पहले हो चुका है वो भी इतना ज्यादा है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू डाइजेस्ट दैट इन अ लाइफ टाइम। तो आई थिंक दिस इज द मेन रीजन कि क्यों वी रिक्वायर एवरीवन to go to school, to back to school. Go back to, and Azam is that is why Azam is in America right now. We've sent Azam back to school कि तू सीख और back to school तुम सीखो। तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुम पहले जाओ। आपकी साइकाइट्रिस्ट होने के बावजूद हमने आपको साइकोलॉजी में पीएचडी करने के लिए भेजा है, एंड इन दैट रिगार्ड आजम मेरे से 1 साल सीनियर है। पीपल ही इज माय, मैं आजम को आजम भाई बोलूंगा जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंच जाऊंगा। तो और मैं आपकी रैगिंग भी करूंगा। पर मेरी रैगिंग ना करी यार, तेरी मेहरबानी। ठीक हो गया। तो and I think one important aspect of that, and that's another area where we would proudly distinguish ourselves from how things are commonly carried out, कि हमारी practice, हमारी clinical practice के अंदर जो theoretical foundations हैं और theoretical constructs हैं, उनके साथ जो एक disconnect पैदा हो गया है, that our typical practitioner would not know कि साइकोलॉजी के कौन से स्कूल ऑफ थॉट से और साइकोलॉजी के कौन से थिंकर से और किस फिलोसॉफिकल ओरिएंटेशन से उसकी प्रैक्टिस मुतासिर हो रही है। मतलब वो साइकोलॉजी का जो साइकोलॉजिकल टेक्निक का जो अनकॉन्शियस है या जो उसके पीछे छुपी हुई थियरेटिकल स्ट्रक्चर है, उससे अक्सर औकात completely नाबलद होते हैं। They have no idea as to where it's coming from, and therefore उसके अंदर अगर कोई problems आएंगी तो they're not capable of looking at the historical progression or development or the philosophical underpinnings in order to see maybe the problem may be there, and the entire debate is going to be on the surface. सारी जो भाग दौड़ होगी, सारी जो डिस्कशंस होंगी, सारी जो लड़ाइयाँ होंगी, वो सरफेस पे हो रही होंगी। सरफेस के नीचे का एक्सेस भी यूजुअली डिनाइड होगा, राइट? टू द पॉइंट, हम फ्रैंकल की बात कर रहे थे, इवन आज आप क्लिनिकल साइकाइट्रिस्ट बन सकते हैं, आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन सकते हैं, और आपने फ्रॉइड की बारे में कोई 2 लाइनें भी ना पढ़ी हो, फ्रॉइड की लिखी भी ना पढ़ी हो, and that's completely possible today, right? So जो even आपने साइकियाट्री भी ना पढ़ी हो, फिर भी एचओडी लग सकते हैं। चले, those are exceptional circumstances. I'm talking about the routine problems. So the idea being to reconnect, to try to bridge this theory and practice का जो एक unfortunate dichotomy बन गई है, which is to the harm and deterioration of the field itself. That's one condition that we've looked to address. And Gigi, there is also something you mentioned, mental health campaigns, और उनका अभी तक मुझे भी नहीं पता, तो काइंडली मुझे भी बता दें और बाकियों को भी बता दें।
आप पढ़ाई में इतने मसरूफ होते हैं, आप कोई मीटिंग पे आए तो आपको बताया ना। तो बहरहाल, तो जिस तरह हमारी बात हुई ना, वी स्पोक अबाउट कि हमने स्पेशलिस्ट एंड ले प्रैक्टिशनर्स का, वी वांट टू एड्रेस दैट गैप एंड दैट द रेलेवेंस ऑफ दैट, लुकिंग एट द मेंटल हेल्थ गैप एंड द नीड एंड ऑल ऑफ दैट। दूसरी हमने जो बिल्कुल अभी बात की कि थ्योरी और प्रैक्टिस की जो एक डायकोटमी अनफॉर्चुनेट बन गई है, उसमें we want to distinguish ourselves, overcome that by ensuring that we have this continuous education going on, particularly of the theoretical underpinnings of our subject, which is why we would go to very unpopular places to study psychology that usually people would not resort to. अब वो पूछेंगे भाई आपको क्या ज़रूरत पड़ी तारीख, साइकोलॉजी की तारीख में जाने की, फ़लसफ़ियाना चीज़ें पढ़ने की? हम पढ़ेंगे, आप लोगों को क्या है? हमारे हिसाब से ये ज़रूरी है, अगर ये नहीं होगी तो आगे प्रोग्रेशन नहीं हो सकती। बहरहाल, जो तीसरी एक अनफॉर्चुनेट डायकोटमी है कि जो एक्सपर्ट होता है, जो एक्सपर्ट जब बन जाता है, और एक्सपर्ट बनने के लिए उसको जो पापड़ बेलने पड़ते हैं और जो ज़बान सीखनी पड़ती है, टेक्निकल लैंग्वेज, वो सीखते सीखते और अपने बाल धूप में नहीं असल में या जिस तरह भी सफ़ेद करते करते वो एक ऐसे मकाम पे फायज हो जाता है कि आम आवाम रह जाती है। उनसे बातचीत करना, उनको कुछ बताना, उनसे कनेक्ट कर पाना, that becomes not just difficult, even impossible. And so एकेडेमिया में जो एक फ्रेज इस्तेमाल होता है कि आइवरी टावर्स बन जाते हैं, जिनके अंदर से जो भी अगर कोई पब्लिक की खैर की बात है या उनकी जानकारी की बात है, वो पब्लिक तक कम्युनिकेट नहीं हो पाती। अगर कम्युनिकेट करने की कोई कोशिश की जाती है तो सारों के सर के ऊपर से वो बातें गुजर जाती हैं। तो फिर दे डोंट हैव अ चॉइस बट टू रिजॉर्ट टू celebrities and popular figures and unsupervised, not just non-specialists but ignorant folk in every respect, right? वो फिर सेल्फ हेल्प बुक्स की तरफ जाएंगे, वो सेलिब्रिटीज़ की टेड टॉक्स की तरफ जाएंगे, उनके लिए जो मोटिवेशन आएगी और साइकोलॉजी की जो अंडरस्टैंडिंग आएगी वो मूवीज़ एंड ड्रामाज एंड मीम्स एंड गॉड नोज व्हाट एल्स वहाँ से आना शुरू हो जाएगी। And we can't just blame the public for resorting to these resources. Experts जब अपने आप को अपने कमरों में, अपने क्लिनिक्स में, अपने लेक्चर हॉल्स में, अपने ऑफिसेज में बंद कर लेंगे, unapproachable and inaccessible, then this is a natural consequence, right? So our mental health campaigns or campaigns in general, they look to address this gap. And for this reason, we have ambassadors, people who are aware of the challenges of mental health in the society and have volunteered themselves कि हम उनके साथ information share करेंगे, recommendations share करेंगे, awareness about different areas of concern, चाहे वो child sex abuse से related है, वो mental health से related है, वो mental health की किसी भी aspect से related है, उन recommendations को, उन अवेयरनेस मटेरियल को हमारी तरफ से पब्लिक के लिए लेके जाएंगे, स्टूडेंट्स के लिए लेके जाएंगे। और ना सिर्फ ये कि दे आर गोइंग टू बी मैसेंजर्स फॉर अस, दे आर गोइंग टू बी इन्फॉर्मिंग अस एज वेल। हम भी उनसे सीखेंगे कि हमें क्या नहीं पता about the problems that people are experiencing, where have we become disconnected. So they're going to give us that feedback, they're going to give us those recommendations, and based on this we will alter the way we operate, the way we inform the public. And that's going to be our mental health campaigns. We're going to have a different campaign every month. January May mental health awareness, we've chosen to start with that, and then each month we'll have a separate campaign. Our coaches, our consultants will be
heading those campaigns, and the ambassadors are going to be helping and facilitating and carrying that content to the people for their benefit. That's the idea. एंड यूसुफ एक चीज शायद आपने बताई है अबाउट आवर फिल्टर क्लिनिक कि ऐसा Yes. नहीं होगा कि वो रैंडमली अलॉट हो जाएंगे. Hani, we spoke about that. Okay, one thing that distinguishes us in terms of our practice is that whoever comes in is first going to be seen by our psychiatrist, Dr. Omar, in the filter clinic. These days it's Dr. Omar, but of course we can, with that may develop. We may have more consultants operating in our filter clinic, but And Dr. Omar will be in charge. apart from doing the filter clinic, he also does photo shoots. He also does photo shoots. He's a black belt in karate and he is one heck of a cook. Yeah. मैंने और डॉक्टर उमर ने एग्जाम की तैयारी इकट्ठे की थी. मैं पढ़ता था और वो कुकिंग करते थे. मतलब उन्होंने भी पढ़ाई शुरू कर दी. So he is where he is right now. Okay, so thank you so much, people, for being here with us, giving us, lending us your ear for us to share with us what we're most passionate about, the difference that we're looking to create. And Azam, I think that's a wrap. Yes. Okay. I think, yeah. We're good, people. Thank you so much for joining us. If you have questions, if you have any other information that you want about what it is that we're doing, why is it that we're doing it, please feel free to reach out to us. We would love to respond to you. And we're done. Wa akhiru da'wana and alhamdulillahi rabbil alamin.